Like it's another feeling to walk through the in the stories that we say. like how to do basic Someone's waiting to be told. Acting compasses the blame. Good morning guys, my name is Anjali and welcome back to my travel channel. तो आज का प्लान है, टुडे सैटरडे सो लॉन्ग डे फॉर मी, लाइक नो ऑफिस ऑफ कोर्स टुडे. तो आज का प्लान है टू स्ट्रॉल एंड विजिट अराउंड द लोकल प्लेसेस इन धर्मशाला, धर्मकोट, मैक्लियोड. तो प्लान का कुछ सीन इस तरीके से कि आई विल बी गोइंग टू धर्मकोट स्टूडियो, जहाँ पे इट्स लाइक यू नो समथिंग इज़ रिलेटेड टू आर्ट एंड पोट्री. तो वहाँ पे जाकर विज़िट करना है. एंड आफ्टर दैट वी विल बी विजिटिंग टू मैक्लियोडगंज. वहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ एक्सप्लोर करना है एंड उसके बाद मार्केट एरिया एंड वी कैन गो टू मोनेस्ट्री ऑल्सो. फिर उसके बाद प्लान है कि फ्रॉम मैक्लियोड टू धर्मशाला स्टेडियम. तो दो इट्स good sunny day it seems like, and of course complete the trail as planned, but let's see how will it go. So let us get started. We reached to Dharamkot studio और I guess it should be open now क्योंकि opening time like 11 AM to 5 PM तक का होता है. I asked there शायद एक या दो क्लास चल रहा है. We can see and like learn if we get the time. So let's go. Vivek. So Vivek, there is class going on maybe? Right now it's no class, but they are working. Okay. I mean, if you are in here, Dharamkot village, do visit this pottery class. I mean, the vibe of this place is so artistic and beautiful. So we'll go inside and already there are some people who is on to the pottery. So let's interact with them. Hi. Okay, here meet Abhinav. He is preparing this clay mitti so that I can try my hands there. So it's really going to be fun क्योंकि मुझे इस wheel पर बैठना है and I can try with this you know making that. थोड़ा मोड़ा पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा. पहले क्ले को सेंटर करना है. मैं आपको सेंटर करके दूंगा. Acting compasses the blame. Watch the scenes we live unfold. क्ले ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है तो इसका यूज नहीं कर देंगे. इसको निकाल देंगे. तो clay का consistency मतलब like medium to soft. Hi. Oh, thank you so much. I made something very bad, but still. ठीक है. फिर इसको नेचुरल तरीके से सूखने देंगे हम. ऐसा हाँ. नहीं है कि इसको अभी डायरेक्ट हीट में रख देंगे या फिर हाँ. सनलाइट में रख देंगे तो ये क्रैक हो जाएगा. तो ये नेचुरल तरीके से सूखने देंगे तो ये फिर इस शेप में आ जाएगा.
ड्राई होने के बाद इसको फायर करते हैं हम, और उसका टेम्परेचर रहेगा 850 सेंटीग्रेड। अच्छा, और तो उसको फायरिंग में समय लगता है 6 से 8 घंटे। तो उसके लिए मशीन जो यूज़ होता है? हाँ, वो मैं बताता हूँ आपको। पहले मशीन दिखाता हूँ आपको। हाँ। Here we are learning some process of, making an artistic piece. लाइक ओवन समझ लीजिए आप इसको, भट्टी। भट्टी हाँ। काइंड ऑफ। अच्छा। और ये एक सिरेमिक बोल है। हाँ। मतलब ये जलता नहीं है फायर में। ओके। और जब इनको फायर करेंगे फर्स्ट टाइम, तो ये जो टेराकोटा नेचुरल कलर होता है, जो आपने कुल्लड़ देखे हैं या फिर घड़े देखे होंगे, कुछ भी देखा होगा। हाँ। मैं अंदर दिखाता हूँ आपको पहला। तो इस कलर में होंगे ये स्टार्टिंग में। ओके। जब ये एक बार फायर होंगे, फायर करने के बाद इनको ग्लेज करते हैं। ग्लेज मीन्स जो ये देख रहे हैं आपको, इस तरह के कोई भी कलर, और ये फूड सेफ होते हैं। ये Food कलर safe? नहीं है एक्चुअली। हाँ। अंदर आइए, बाहर रखिए। तो ये देखिए हमारी केमिस्ट्री लैब है। हाँ। यहाँ पे हम ग्लेज बनाते हैं। क्ले केमिस्ट्री लैब। बिल्कुल। फिर एक इसका मिक्सचर बनाएंगे एक बकेट में। तो जब ये फायर होके आएंगे, हाँ। तो उसमें इसको डिप कर देंगे कलर करने के लिए, वो जो ग्लेज करने के लिए। हाँ। ये स्ट्रॉन्ग है, अभी फायर हो चुका है तो ये स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो उसको डिप करके थोड़ा सा ड्राई करेंगे और फिर से इसको फायर करेंगे। और इस फायरिंग का टेम्परेचर रहेगा लगभग 1000 to 1200 सेंटीग्रेड। ओके। तो इसकी फायरिंग को 8 से 10 घंटे लगते हैं। अच्छा। और इसमें ऑप्शन ये रहता है कि हम कोई भी कलर कर सकते हैं इसमें। ये पहले से पता होता है हमें कि हम कौन सा कर रहे हैं। एंड द बेस्ट पार्ट, ये शिप होता है ऑल ओवर इंडिया, सो यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर। और यहाँ पे कोई वेबसाइट धर्मकोट स्टूडियो के नाम से। हाँ, तो धर्मकोट स्टूडियो नाम से वेबसाइट भी है, सो यू कैन ऑर्डर योर सेल्फ आर्टिस्टिक पीस। तो डू विजिट, बट अगर आप यहाँ आ रहे हो तो प्लीज़ डू विजिट। बहुत काइंड ऑफ पीसफुल था, मतलब व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग समथिंग, वो पता है कि अच्छा नहीं होता ऑब्वियसली, यू नीड प्रैक्टिस, बट बहुत अच्छा लगेगा आपको। डू विजिट हियर। I had just a wonderful session. Like मैंने सेशन तो वहाँ पे सेशन नहीं किया, like it goes 2 घंटा का सेशन, 2 hour सेशन if you want to learn। और वहाँ पे तो you can enroll yourself। और क्लासेस भी होते हैं जैसे मंथली बेसिस पे, एंड I guess it's weekly basis also। तो you can एक्सप्लोर देयर वेबसाइट इटसेल्फ, और वहाँ पे आप खुद को इनरोल करा सकते हो, एंड अकॉर्डिंग टू द फीस यू मे पे। बट ऑन द पॉइंट व्हाट इज़ द थिंग दैट इट वाज सच अ ब्यूटीफुल, मतलब मुझे काइंड ऑफ मेडिटेशन लगा कि कितना पीसफुल था। तो आई ट्राइड बाई हैंड फॉर द फर्स्ट टाइम, और it was amazing to visit Dharamkot studio. So we have already ticked out our plan number 1 for today's, and now we are heading toward the plan number 2. in the stories that we say.